We will read with you 19th verse from the 7th chapter of the 8th canto of Srimad-Bhagavatam, which is entitled, Lord Shiva saves the universe by drinking poison. Tadugravegam dishidishupari adho visarpat utsarpata sahyam apratibhitah prajadut druvur anga seshvara aprakshyamanah sharanam sadashivam. Translation by Srila Prabhupada. O king, when that uncontrollable poison was forcefully spreading up and down in all directions, all the demigods, along with Lord himself, approached Lord Shiva, Sadashiva. Feeling unsheltered, they very much afraid they sought shelter of him. Lord Shiva One may purport by Srila Prabhupada. One may question that since the Supreme Personality of Godhead was personally present, why did he accompany all the demigods and people in general to take shelter of Lord Sadashiva instead of intervening himself? Srila Madhvacharya, in this connection, Srila Madhvacharya warns, Rudrasya yashasorthaya svayam Vishnur Visham Vibhu nasanchare samarthopi vayuksho che prashantaye. Lord Vishnu was competent to rectify the situation, but in order to give credit to Lord Shiva, who later drank all the poison and kept it in his neck, Lord Vishnu did not take action. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimad Bhakti Vijnana Goswami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Yantah Pravishya Mamvachimam Prasur Sanjivaya Dekila Shakti Daraswadam Anyam Shahasta Charana Shravana Bhagavad Pranam Bhagavate Vishnu. So I'm very happy to be with you on this night of Shivaratri. This night of Mahashivaratri has a great significance. For those who are following Lord Shiva, it's the greatest festival during the year. But from Srimad-Bhagavatam we also know that Lord Shiva is the greatest Vaisnava. Vaishnavanam yatha Shambhu. In the 12th canto of Srimad-Bhagavatam, Sutta Goswami says that like among the rivers, Ganga is the greatest.
Among all the devas, Achyuta is the greatest. Among all the Vaishnavas, Shiva is the greatest. श्रीमद्-भागवत में बारहवें महीनों में और गुजरात में जितने भी सारी पवित्र नदियाँ हैं, सबसे जो पवित्र नदी है वो श्रीमद् गंगा नदी है और इसी तरह से जो सबसे पवित्र वैष्णव है उसमें वैष्णव जी सबसे वैष्णव है और जो सबसे बड़े भक्त जो सबसे ऊंचे हैं वो लॉर्ड शिवा है। So we also worship Lord Shiva with great awe and reverence, celebrating his great devotion to Lord Visnu. अपने लॉर्ड शिवा जी का आराधना करने से उन्हें संबंधित करना चाहिए कि वो लॉर्ड विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। And in Srimad-Bhagavatam, in many stories, the greatness of Lord Shiva is being revealed. श्रीमद्-भागवत ग्रंथ है, इसमें लॉर्ड शिवा के बारे में काफी सारी ऐसी वास्तविकता उल्लेख किया गया है जो हमें पता चल सकती है। And his main greatness is that he wants to serve to the Supreme Lord by doing some ungrateful service. और लॉर्ड शिवा ने उनके सबसे बड़ा गुण अच्छा है कि उनको लॉर्ड विष्णु की सेवा नहीं है, उनका सबसे बड़ा अच्छा गुण है। We all try to serve the Lord, हम सब बड़े कोशिश करते हैं कि भगवान की कृष्ण को सेवा कर सकें। but we always think, if I serve the Lord, he will give me something good. लेकिन हमारे जो मन में जो हमारी जो क्षमता होती है वो भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की कृष्ण उसके बदले देंगे। We may not state it very openly, but we all somehow or other expect or count that he will give me some mercy. कहीं ना कहीं हमारे जरूरी विचार आता है जो उनकी बताने बातें करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कुछ भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान उसकी बदले देंगे। We come to the Lord in front of him. He's standing in the altar and we say, my dear Lord, I don't want anything, but you know better what I need. इस तरह हम लोग बच्चे रहते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान के सामने जब उपस्थित रहते हैं तो हम शायद कभी ना कभी विचार करते हैं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षा रखते हैं। But this is not real service. पर ये जो सही सर्विस का मूल्य नहीं है, ये सही सर्विस नहीं है। Srila Rupa Goswami says that the real service starts when you are anyabhilasata shunya jnana karma dhanavridhamanukudiyana krishnanushelana. This is the real service. ये रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि जो सच्ची सेवा है वो बड़े किसी एक्सपेक्टेशन पे किसी कारण पर होनी चाहिए। And Lord Shiva exemplifies the spirit of service when he doesn't expect anything for his service. और जो भगवान शिव जी हैं वो इस गुण को एग्जैम्पलीफाई करते हैं, लेकिन लोगों के मन के हृदय में ऐसा कोई विचार होता है। He, in the Shastras, on many occasions it is described that Lord Visnu gives him the most ungrateful service. शास्त्रों में कई बार इसका उल्लेख किया गया है कि जो भगवान विष्णु जी हैं वो लॉर्ड शिवा को बहुत ही अनपढ़ी अनकंफर्टेबल सेवाएं देते थे। He, we know, is the destroyer of the universe. When the time to destroy the universe comes, then Lord Shiva starts his tandava nritya and the whole universe is being destroyed. लॉर्ड शिवा की सेवा जो ये है, जैसे कि प्रकृति में ऐसे कोई भूकंप ऐसे कोई आना होता है तो लॉर्ड शिवा की सेवा शुरू होती है और वो अपना तांडव शुरू करते हैं। This is very ungrateful service because if somebody is destroying something, nobody glorifies him. ये जो भगवान विष्णु की लॉर्ड शिवा की जो सेवा की है ये बड़ी ही अनएक्सपेक्टेबल अप्रिशिएट सेवा नहीं है, बल्कि लॉर्ड शिवा की सेवा की गई है। If somebody builds something, everyone glorifies him. He builds such a beautiful temple. अगर कोई भक्त बहुत ही बड़ा अच्छा आकर्षक मंदिर बनाता है तो सब भक्त लोग के गुणगान गाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। But if somebody comes and smashes this temple to pieces, nobody will say, thank you very much, you did such a good service. कोई कोई आदमी उसको तोड़ दे, उसको पूरा खत्म कर दे, कोई उसका अप्रिशिएट नहीं करेगा। But it's also necessary. It's a necessary service. और ये सेवा भी महत्वपूर्ण है। Or sometimes Lord Shiva has to give some benedictions to some demons. कभी-कभी लॉर्ड शिवा को किसी भक्त को किसी demon को भी कोई बेनिफिशियल या कोई ऐसा श्राप देना पड़ता है।
Or in this story of Srimad-Bhagavatam, which we just read, this one verse, Lord Shiva has to drink poison. इसी तरह श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि कहीं वास्तव में लॉर्ड शिवा को विष पीना पड़ता है। You know, we all expect that we do some service and they give us some Mahaprasad. हम जैसे अपने गुरु को सेवा करते हैं तो अपने कभी महाप्रसाद होना चाहिए। And Lord Shiva comes and they give him the most dangerous poison which is there. Please drink, this is your award. उसी प्रकार जैसे लॉर्ड शिवा की सेवा करते हैं तो उनको महाप्रसाद की करके विष दिया जाता है ये आपका अवार्ड है आपका प्राइज है। And if we would be treated like this, I don't know for how long we could be treated like this and still believe in the Supreme Lord and still worship Him. और जब हम अगर हमारे साथ ऐसा कभी हो तो हमें ये नहीं पता चलता कि कितने दिन तक हम इतनी देर तक इसको सहन कर पाएंगे और जब लॉर्ड शिवा जी को कोई सेवा नहीं करेंगे फिर भी वो लॉर्ड विष्णु को अपना पूरा फल करते हैं। Actually, this fact that Lord Krishna and Lord Visnu give the most difficult service to Lord Shiva means that they have complete trust to him. जो भगवान विष्णु जी या कृष्ण जी हैं ये जो सेवा लॉर्ड शिवा जी को देते हैं वो इसके लिए दी गई है कि उनको लॉर्ड शिवा जी पर बहुत ही विश्वास है बहुत ही ट्रस्ट है। If we trust somebody, we will do something very ungrateful to him because we know that his devotion will not swear, his devotion will not change because of this ungrateful service. और हम जिस भक्त को विश्वास ज्यादा करते हैं हम उसे इतना भी दुख भरा काम को सौंपते हैं ऐसी सेवा को सौंपते हैं मतलब ये हमेशा रहता है कि इसकी जो भक्ति है वो नहीं चाहिए। So we have to understand very nicely who Lord Shiva is. First of all, we have to understand his tattva, his nature, his truth about him, and then we will be able to understand all these leelas properly. तो हमें लॉर्ड शिव जी के नेचर को समझना बहुत जरूरी है और हम उनके स्वभाव को समझ पाएंगे सबसे पहले तो ही हम उसके आगे के जो वास्तविक है उनके जो दुनिया है उनको हम समझ पाएंगे। So in Brahma Samhita, Shiva Tattva is described very beautifully. ब्रह्म संहिता में शिव तत्व को बहुत ही अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है। Shiram yatha dadi vikara vishesha yoga sanjadaya abhitatha pritakasti heto. So Lord Brahma, while praying to Lord Govinda, Govinda Madhipurusam tamaham bhajami, he says that Shiram yatha dadi vikara vishesha yoga. In the same way as yogurt and milk is the same substance, so Lord Shiva or Shambhu is the same substance as Lord Vishnu. ऐसा भी पता है कि जैसे वैष्णव का दूध है वो सेम ही सब्सटेंस है ठीक उसी तरह ही जो भगवान कृष्ण जी हैं और भगवान विष्णु वो भी एकदम सेम। Milk and yogurt is the same. Because yogurt is only coming from milk. You cannot make yogurt from, I don't know, from wood or from tea or whatever. But it's vikara vishesha yoga. It's a different transformation of the same substance. And the meaning of this is very, very important and significant. It is explained in the same Brahma Samhita what is this vikara, what is this transformation which is taking place when Lord Vishnu transforms into Lord Shiva. Lord Vishnu is completely transcendental to this world. He has nothing to do with this world. Lord Vishnu जो है कृष्ण वो इस पृथ्वी से इस प्रकृति से एकदम अलग ही है उनको इस जगत से कोई लेना नहीं है। Even Shankaracharya, Srila Prabhupada often quoted his statement from his commentary to Bhagavad Gita. He says, Narayanam paro avyaktat. शंकराचार्य जी के ग्रंथों में
में किया हुआ है। Narayanam para vyaktat. He is transcendental to this vyakta, to this manifest world. भगवान विष्णु जी जो है वो इस अद्भुत पृथ्वी से पूरी ट्रांसेंडेंटल है, उनका ये पृथ्वी से मतलब से कोई जाना। So Lord Vishnu is not in touch with this world, is not in touch with matter. लॉर्ड विष्णु जी का इस पृथ्वी से जो है इस लोक से कोई संबंध नहीं है। But at the same time, we always say that Lord Vishnu is everywhere, Lord Vishnu is here, Lord Vishnu is controlling everything. वही हमेशा जानते हैं लोग कहते हैं कि भगवान जो विष्णु जी हैं वो इस पृथ्वी को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, उस पृथ्वी को पूरा चला रहे हैं। In reality, when we say this, we mean Lord Shiva. और हम जब ऐसा कहते हैं तो भगवान विष्णु जी हम भगवान शिव जी के बारे में ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा कहते हैं। Because in the form of Shambhu, Lord Vishnu comes in contact with this material energy. ठीक उसी प्रकार विष्णु भगवान है और विष्णु शंभू जी के रूप में आके इस पृथ्वी को पूरा कंट्रोल करते हैं। Lord Shambhu is the personification of Lord Vishnu's glands. तो भगवान शंभू जो है शिव शंभू जी वो भगवान विष्णु के अद्भुत के विष्णु के appearance है। It is explained in the Upanishads that Lord Vishnu creates this material world by glancing over material nature. ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि जो भगवान विष्णु जी हैं वो इस पृथ्वी को अपने विष्णु के थ्रू अपने आंखों के थ्रू उसको क्रिएट करते हैं। His glance has such a power that his glance, by casting his glance over material nature, his glance take shape of Lord Shambhu. भगवान विष्णु की जो दृष्टि है वो इतनी पावरफुल है कि अपने ग्लास से अपने नजर के थ्रू पूरा मतलब जो मैनिफेस्टेशन है वो होता है और शिव जी को कितना प्रेज होता है। And Lord Shambhu is coming in contact with material nature, creates all other living entities. और वो भगवान विष्णु के अस्तित्व के थ्रू ही जो शिव शंभू जी भगवान है वो मटेरियल नेचर का मैनिफेस्टेशन करते हैं। So, Srila Bhaktivinoda Thakur, while explaining these verses from Brahma Samhita, he actually in detail explains the transformation which takes place when the Lord comes in touch with the material energy. श्री भक्तिविनोद ठाकुर भगवत गीता में बताते हैं कि इस तरह लॉर्ड विष्णु इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको इसका उदाहरण देते हैं। Lord Vishnu is great, भगवान विष्णु बड़ी महान है, but when he comes in touch with the material energy in the form of Lord Shambhu, of Lord Shiva, he gets a little particle of minuteness. वही भगवान विष्णु जो बहुत बड़े महान को है उनका जो मटेरियल नेचर से कनेक्शन होता है थ्रू लॉर्ड शिव शंभू जी तब उनको अपना जो पूरा जो है बहुत ही छोटा सा बहुत ही माइन्यूट लगता है। And he also keeps away, he has his ahankar, his ego, which makes him separate. और भगवान का जो अहंकार होता है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको थोड़ा हमेशा अलग लगता है। And from this transformation of minuteness and ahankar and chit shakti, when chit shakti is mixed with these elements, the nature of Shambhu Tattva comes into place. और वही जो नेचर है माइन्यूटनेस का भगवान बताते हैं तब जाके शिव शंभू जी की जो एक्चुअल अपीयरेंस है और इनका जो कार्य है वो हमारे सामने आता है। When we look at ourselves, because we are little replicas of Lord Shiva, जब हम खुद को भी आपस में देखते हैं तो हमने कहीं न कहीं छोटे से और ऊंचे से लॉर्ड शिवा के एक पात्र हैं। we all have ahankar. हम सभी अहंकार हैं। Somebody doesn't have ahankar. We all have false ego. हम सब में फॉल्स ईगो है, सब में अहंकार है And we have this minuteness. और बहुत ही तुच्छ है। Very tucha, yes. So, this is all creation of Lord Shiva. He facilitates our existence in this material world. ये सब भगवान शिव जी का क्रिएशन है इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड।
But actually, he comes here in his manifest form as Lord Shiva to teach us what we should do with this ahankar and with this nature which we have. इसी प्रकार भगवान जो प्रकट होते हैं वो हमें ये दिखलाने आते हैं हमें इस नेचर को हमारे जो ये अहंकार है जो फॉल्स ईगो है उसके साथ हमें मिलाना आना चाहिए। Yes, we all have this independent nature. हम सब में एक अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति है और नेचर है, इंडिपेंडेंट नेचर है। Yeah, when we become teenagers, we become very independent. जब हम अपने टीनेजर्स में होते हैं तब हम बहुत ही इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। Because of this ahankar, because of this false ego. उसका कारण ये है कि हम सब में अहंकार आता है, हम सब में फॉल्स ईगो होता है। But again, Lord Shiva teaches us what to do with this. Actually, if we employ this independent nature in the service of the Supreme Lord, we can transcend this independent nature. अभी भगवान शिव जी जो है वो हमें बताते हैं कि हमें हमारे इस व्यवहार से इस कुछ अहंकार से हमें क्या करना चाहिए और हमें उसके कैसे आगे बढ़ना चाहिए। And how to do this, Lord Shiva also teaches us. और वो कैसे किया जाए वो भी लॉर्ड शिवा बताते हैं। He teaches us that the method of transcending our conditioned nature or of our independent nature is to always think about the Supreme Lord. और भगवान शिव जी जो है हमें उस तरह से सिखाते हैं कि हमारे जो छोटा सा अहंकार है जो फॉल्स ईगो है हमें ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ भगवान के नाम में स्मरण करना चाहिए। And to be always ready to render the service to the Supreme Lord. और हमें हमेशा भगवान को भगवान के भक्तों की सेवा में होना चाहिए। Like in this particular story which we read from, story of Srimad-Bhagavatam which we read from, Lord Shiva is exemplifying this spirit of service that he is drinking the poison. ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक से लिखा है कि भगवान जो शिव जी हैं वो कैसे अपनी सेवा विष के भगवान की कृष्ण जी को खुश करना चाहते हैं। We all know this story when the demigods and demons were churning the milk ocean. And then the first thing which appeared from the milk ocean was the Kalakuta poison. हम सब जानते हैं कि जब कृष्ण का दोष हुआ था तो जो सबसे पहले जो विष निकला था वो कृष्ण। And this Kalakuta poison was so terrible that it started spreading all over the universe. और ये जो विष का निकला था वो इतना ही खतरनाक और इतना गहरा था कि वो पूरी पृथ्वी पर फैल रहा था। It's actually very significant because this churning of the milk ocean exemplifies our endeavors on the spiritual path. ये जो पृथ्वी के वास्तव में चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन जो पूरा दृश्य हो रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए बिकॉज ये भी एक तरह का प्रोसेस है कि हमें हमारे नेचर को कैसे चर्न करके उसको भगवान की सेवा में लाना चाहिए। Ultimately, we all want, by doing our sadhana, by doing our spiritual practice, we all want to achieve Amrit. हम सभी ये प्रयास करते हैं कि हम तो हमारी सेवा भक्ति करते हैं तो हमारी साधना करते हैं कहीं तो उसका कुछ न कुछ तो अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। Why do we do this japa? Why do we come to the temple? Because we are afraid of death. हम जब जप करते हैं हम रोज मंदिर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो क्यों करते हैं क्योंकि हम सभी बहुत से डरते हैं। We want to achieve this state when there is no death. हम सबको बस एक अचीव करना है बियॉन्ड डेथ। And when demigods and demons are churning this milk ocean, they also want to achieve Amrit. जब डेमिगॉड्स बहुत से कुछ कुछ करते हैं उनका भी यही है कि हमें इसके आगे बढ़ना है और उसका भी कंसीडर करना है। But Amrita doesn't come very soon. जो अमृत है उसको आने में बड़ा समय लगता है। We all know Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Didn't come. हम सब जानते हैं कि हम जब महामंत्र का जप करते हैं तो काफी प्रयास होता है काफी उसमें समय लगता है और कितना समय लगता है कि हम जानते नहीं। But poison comes. बट हमेशा आ जाता है। Sometimes we feel very dejected, sometimes we feel very, down. We're doing this spiritual practice and nothing comes. हमें काफी बार ऐसा लगता है कि हम अपनी साधना भक्ति करते हैं रोज जप करते हैं रोज माला करके सेवा करते हैं लेकिन हमें उसका कोई पॉजिटिव हमें उसको कोई रिटर्न नहीं मिलता है।
Instead of Amrit, so many problems come to our head. और कुछ पॉजिटिव मूड करना है, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होता है, कहीं कोई दवाई नहीं होती। So this is the first thing, this is proper, this is very bona fide that the problems comes. यही सबसे बड़ा स्टेज है हमारी साधना भक्ति का और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जहाँ पे तकलीफें आती है समझो वही हमारी सही शुरुआत है। Because inside us there are so many problems, and when we start churning, when we start spiritual practice, all these problems they surface, they become visible. जिस तरह हम अपने अंदर की आत्मा को देखते हैं, जैसे हमारी साधना भक्ति करते हैं, धीरे-धीरे जो भी हमारे अंदर की गलतियां हैं, जो भी विभिन्न प्रकार के नेचर हैं, वो हमारे सामने बाहर हो जाते हैं। It's not that this poison is coming from somewhere, it's coming from us. It's already there. ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर किसी गवर्नमेंट से किसी आ रहा है, ये हमारे अंदर छिपे हुए जो डिफिकल्टीज हैं, जो भी हमारे नेचर प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। So in the same way, when the demigods and demons were churning this milk ocean, the poison surfaced, and it appeared that this poison will kill all the living entities in the universe. ठीक उसी तरह से सब डेमिगॉड्स उस मिल्क ओशन को चर्न कर रहे हैं और जो भी विश्व के सामने वर्ग में बाहर आ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि पूरा जो विश्व की पृथ्वी को खत्म कर दिया। And when this happened, all the demigods together with Lord Visnu himself came to Lord Shiva. और जब ये विश्व बाहर आएगा, सारे डेमिगॉड्स उपस्थित थे, वो लॉर्ड विष्णु के पास जाके सीधे लॉर्ड शिवा के पास गए। They approached Lord Shiva and started praying to him, please do something about this problem which we have. सब डेमिगॉड्स जो हैं विष्णु भगवान जी के साथ शिव जी के पास आते हैं, उनको प्रार्थना कर रहे थे कि आप प्लीज इसका कुछ कीजिए। Basically, that signifies then when we, during our spiritual practice, encounter some problems, we have to approach somebody who will be able to help us. ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी साधना भक्ति करते हैं और हमें जब हमारे कुछ अद्भुत दिखते हैं तो हमको भी किसी सीनियर के पास या किसी काउंसलर के पास किसी अपना एडवाइस लेना चाहिए। You know, we need to give somebody our poison. हमें हमारे जो हमारी तकलीफें हैं इसको दे देनी चाहिए। Otherwise, this poison will kill us. नहीं तो परीक्षा खत्म कर देंगे। We all know that when we have all these problems, we have to give these problems to somebody. हम जब जानते हैं कि हमारे पास इतनी सारी तकलीफें हैं, तो हमें हमारी तकलीफें किसी और को देनी चाहिए। And in the same way, the demigods and demons, they came to Lord Shiva and started praying to him, please take this poison. ठीक उसी तरह जो बाकी के डेमिगॉड्स हैं, वो शिव जी के पास आते हैं, उनको प्रार्थना करने लगे कि आप प्लीज ये विश्व को कुछ कीजिए। And Lord Shiva was not alone, he was sitting with his wife, Bhavani, Parvati. और उस प्रकार लॉर्ड शिव जी अकेले थे, उनके साथ धर्मपत्नी पार्वती जी थी। And all the demigods, they knew that, you know, it's one thing to make Lord Shiva to agree with this. It's another thing if Parvati should also agree with this. और वो सब डेमिगॉड्स जो उपस्थित थे, वो जानते थे कि शिव जी को मनाना एक अलग चीज है और पार्वती जी को उसके साथ भगवान जी को मनाना एक चीज है। If you are sitting together with your wife and somebody approaches to you and says, please take this poison, you probably first have to ask the permission from your wife, can I take it or not? ठीक इसी तरह जैसे पति पत्नी साथ में रहते हैं और अगर उनके सामने कोई प्रस्ताव दिया जाए तो हमेशा पति अपनी पत्नी से पूछे उस प्रस्ताव को So all these demigods, all the Prajapatis of the universe, they were praying and praying to Lord Shiva, and they were glorifying Lord Shiva and saying, please, you only one who can help us in this situation. तो सब जो डेमिगॉड्स थे और वो वहाँ के जो प्रजापति से जो चीज थे, वो सब यही शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आप ही वो है जो हमें इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। And then Lord Shiva looked at his wife, और जब शिव जी ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी को देखा, and his wife understood that he wants to do this service for the Lord. और पार्वती जी समझ गए थे कि शिव जी को ये सेवा करनी है भगवान विष्णु के स्वरूप। And she said, yes, you can do it. And then Lord Shiva, he took all this poison, he concentrated this huge amount of poison within his palms.
the poison became very less. और फिर शिव जी ने जो पूरा जो विष पृथ्वी से निकला था, बहुत ही सारा विष था, उन्होंने अपने हाथों में उन्होंने लेके इसको दे दिया। We all know when we come with our problem, it seems like this problem is huge. हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी तकलीफें आती हैं, हम यही सोचते हैं मेरी तकलीफें जो है बहुत बड़ी हैं। And when we start talking about this problem, and we talk for a long time, and then he takes this problem, somebody who is our spiritual master or our counselor or some senior devotee, and all of a sudden our problem becomes very little. और हम जब अपने उस तकलीफों के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं और बातें करते ये लगता है कि हमारी तकलीफ तो बहुत छोटी हो गई और वो तकलीफों को हमारे गुरु महाराज जी के पास हमारे काउंसलर के पास लेके जाते हैं। It's, I have this experience. I come with such a big problem, and then I put this big problem in front of my spiritual master, and he looks at this, and the problem becomes hardly visible. No problem whatsoever. महाराज जी को बताया कि जीवन में जब कोई बहुत बड़ी तकलीफ आती है तो उस तकलीफ को अपने गुरु महाराज जी के पास लेके जाते हैं और बिल्कुल ठीक उसी तरह से महाराज कहते हैं तो उसको तकलीफ बहुत ही करती है, बहुत छोटी तकलीफ है। So in the same way, Lord Shiva looked at this poison, and just by looking at this poison shrank. It became very small amount. ठीक उसी तरह शिव जी जब उस विष को देख रहे हैं तो देखते हैं कि वो विष को पहले बहुत ही बड़ा था, वो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कुछ सा लगता है। And then he drank this poison. तो शिव जी ने उस विष को पी लिया। But that's also very significant in this story, because when Lord Shiva drank his poison, he didn't drink it completely. ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब शिव जी ने उस विष को पिया तो उसे पूरा नहीं पिया। He kept it in his throat, उन्होंने कुछ विष को अपने गले में अटका के रखा। and his throat became Kalakanta or Nilakanta. His throat became very dark because of this. और शिव जी का जो गला है जहाँ पे उन्होंने विष को रोक के रखा था वो उनका गला जी जो गला नीला हो गया। And there are different explanations why Lord Shiva didn't drink the poison completely. उसके भगवान के काफिले से उल्लेख है कि क्यों भगवान जी को विष को पूरा नहीं पिया। And one very beautiful explanation which I read is that Lord Shiva knew that Lord Krishna is within his heart. उसमें से एक बहुत बड़ा सुंदर तात्पर्य है कि शिव जी को ये पता था कि भगवान कृष्ण जो है वो उनके हृदय में बसे हुए हैं। He always meditates upon Lord Krishna who is in his heart. वो हमेशा भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं और मेडिटेट करते हैं कि उनके हृदय में समाये हुए हैं। And he thought at this moment when he was drinking this poison, I cannot really burn Lord Krishna who is in my heart by drinking the poison completely, so I will keep it in my throat. भगवान शिव जी जो है वो विष को पूरा ग्रहण नहीं करते क्योंकि उनको चिंता रहती है कि जो भगवान कृष्ण जो मेरे हृदय में बसे हुए हैं जब मैं पूरा इसको पी जाऊंगा तो उनको भी कोई तकलीफ होगी तो वो अपने हृदय में उसको अटका के रखते हैं। In this way, Lord Shiva saved the whole universe from this terrible poison which is called Kalakuta. भगवान शिव जी जो है बिल्कुल उसी तरह वो विष को पीने के बाद इस पूरे जगत को बचा देते हैं जो कालाकंठ विष है उसको पी लेते हैं। And in this chapter of Srimad-Bhagavatam, Srila Sukadeva Goswami, he explains, at the end of this chapter, he explains that somebody who is serving others, saving others, trying to help other people, he is the most dear servant of the Supreme Lord. श्रीमद्-भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो भक्त भगवान की सेवा में लगा है और जो भक्त भगवान के भक्तों की सेवा में लगा हुआ है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। Why do we say that Lord Shambhu is the greatest servant of the Lord Vaishnavanam Yatha Shambhu? Why do we say this? हम ऐसा क्यों कहते हैं जो श्री शंभू जी हैं वो सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं? Only because he is ready to sacrifice everything, only because he is ready to do something for others at the cost of his own happiness and comfort. क्योंकि श्री शंभू जी वो भक्त हैं जो भगवान की सेवा में कुछ भी करने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें दूसरों को भगवान की सेवा के हिसाब से सबको खुश रखना है, अपनी सेवा करना याद नहीं है। So this is some lessons of this
beautiful lila which we have to know, that Lord Shiva is very dear servant of Lord Visnu, coming to this universe and doing ungrateful service in this universe. ये दोनों पास जो शिवजी के बारे में जो ग्रंथों से पढ़ते हैं, जो लॉर्ड शिवजी हैं, जो भगवान की सेवा इस तरह करते हैं इस पृथ्वी पर. But at the same time, being in this universe, coming in contact with this material energy, he never forgets the Supreme Lord. ठीक उसी तरह जिस तरह जो भगवान जी इस पृथ्वी पर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो कभी भी भगवान के नाम कभी भूलते नहीं. Why he never forgets the Supreme Lord? Because he serves everyone else. तो भगवान जी भूलते नहीं हैं क्योंकि वो भगवान की भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं. He always sees everyone as the representative of the Supreme Lord and tries to serve them. तो हर एक मनुष्य जी को भगवान के रूप देखते हैं और उनको हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं. And in the same way, in this way, he becomes the greatest devotee of the Lord. क्योंकि बिल्कुल उसी तरह ही श्री शंभू जी भगवान के लॉर्ड शिवा वो भगवान के सबसे बड़े भक्त होते हैं. And Lord Vishnu says that the one, Lord Krishna in Bhagavad Gita even says that the one who serves in this way by trying to help other people is the most dear servant of mine. भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो दूसरों की सेवा में लगा रहता है, उनको सेवा करता है, वो मेरा सबसे लोकप्रिय भक्त है. So in this night of Shivaratri, we may meditate on Lord Shiva as the greatest vaisnava and the greatest servant of the Lord who is ready to do any service to the Supreme Lord. आज का जो लॉर्ड शिवा जी का महोत्सव है, तो आज इस बात को हमें हमारा ध्यान रखना चाहिए लॉर्ड शिवा जी के ऊपर, और ठीक उसी तरह ही हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें हमारे भक्तों का हमारे भक्तजनों का सेवा करें. Other people, when they come on the night of Shivaratri, they always ask Lord Shiva some material benedictions. ज़्यादातर भक्त जो महाशिवरात्रि के मंदिर आते हैं, वो शिव जी की पूजा तो करते हैं, पर शिव जी से हमेशा कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं. Ladies come to the Supreme Lord, to Lord Shiva, and they ask, please give us nice husband. माता जी ज़्यादातर जो आती हैं, भगवान शिव की प्रार्थना करके कहती हैं कि मुझे एक अच्छा पति मिले. And sadhus come to Lord Shiva, and they drink bhang. साधु जो आते हैं वो शिव जी के पास प्रार्थना करते हैं, भांग पीते हैं. But we come to Lord Shiva and we ask, Lord Shiva, please teach us how to serve the Supreme Lord. लेकिन हम जब भगवान के पास आते हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ये सिखाइए कि हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं. How to do some service to the Supreme Lord, even though it's ungrateful service, but still do some service for Him. भले ही वो जो सेवा हो, बहुत ही ungrateful हो, बहुत ही खुश हो, लेकिन तो हमें कैसे करनी है वो आप मुझे बताइए. Without being disappointed by this ungrateful service. तो हमें उस सेवा में बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें वो सेवा करनी चाहिए. So this is little introduction, and now Sarvabhavana Prabhu will start his real Shiva Katha class. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.